Assalamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our new segment, Your Community with Mohsin Patel. Brothers and sisters, first I'd like to thanks to all the viewers who are watching Harman TV. Last week, we had a very great podcast. We had Brother Abdul Hai Patel who came to our studio, who talked about human rights, who talked about the community, what better you can do for your community. Also, he talked about he was a former TDSB trustee. Today, we have a very special guest in our studio. Introduction is not needed, but for the viewers, I will definitely will say something about our guest who is sitting next to me. He's a very well-known person. If you Google his name also in Google, you can find him very easily. He's a great community leader and also he's a TDSB trustee for last 2 terms. So I would like to welcome Brother Zakir Patel to our studio. Zakir Bhai, Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our studio. How are you doing today? Walaikum assalam, Jazakallah Mohsin, for inviting me today for your great show. And I'm so happy to see your leadership when it comes to this show. Because this show showcases the community's heroes who are doing great job. And I'm not hesitant to say that there's one more person like you who does excellent work for the community, which is not seen sometimes. But great show. Keep up the good work. I'm proud of you to call you as a host and a friend. Keep up the great work. I'm doing good. New Year is treating me very well. And thank you for inviting me today. That was very kind words from our guest today, Zakir Patel. Zakir Bhai, we will love to have you here. We were just waiting to get to you in our studio, and there's a lot of viewers asked about us. When is Zakir Bhai coming to your studio? But as I can tell you, we have to go in order. We have to go line by line, and we have to highlight each and every individual who is doing a great work in our community. And you are one of the great leader in our community, doing the great work since many years. I heard you are in Canada more than 20 years, if I'm not mistaken. Yes, I am. Definitely. So today you are here in our host, and we will be definitely talking about our community. So without further ado, I will ask you a first question. That please tell us briefly about your background in the politics and the community relationship. If you can tell about your background and the community relationship to our viewers, just to start off this our show. Thank you for the question, Mohsin. And let me tell you, I don't call this a political thing. I call this community work. And this community work started when I was in school. And during my school time, I used to help lots of students paying for their fees like we're friends. So let's say somebody does not have fees. Hey, can you chip in some money? So this is how the journey started. From there, I went to college. I ran for general secretary. As you know, in India, it's called GS. Yes. I ran for that. Then I came to this country. And this is a passion. It's not about politics. It's about community work. It's about volunteer work. And from there, you run for the office, and now you are called politician. But thanks to Allah, Alhamdulillah, I'm very humble. Friends like you, community members, and the constituents of Scarborough-Galewood has chosen me to be their representative. I enjoy this work. It's not about politics. It's about giving to people. And you can give into many capacities, right? Like what you are doing today. It's the same thing with me. It's the capacity of you giving to someone. That's what you call volunteer work. And I'm humble to do those work. No, that's very proud of you, Zakir Bhai, that you are involved in the community. You are giving back to your community. But as you said, you started your journey as a GS. So your background already is saying that you were so passionate about the political background. And then you are already a TDSB trustee. So you jumped into that direction to be a political. So we will be definitely talking about the community work, also your political background. That's why I asked if you can tell us briefly what's your
political background, and what is the relationship between that community relation? It's a great question. And again, like I'll come back to that. When I came here in 1995, at that time, Mike Harris, John Chrétien, those were the people. We were watching the TV. And like you said, politics is my passion. And policies, economic policies, fiscal policies, immigration policies. I love to watch those type of things, right? So the first campaign came in 1997. I was very much inspired by John Chrétien at that time, Paul Martin at that time. So I started joining volunteer work for my local MP. From there, I started helping MPPs, councillors, you name it, the trustees. And I'll tell you that you had a very great guest last week. Yes, very great talk, very great discussion we But there had. was one gentleman who inspired me to run for trustee, is Ghulam Muhammad. Nice. And he also ran for school board trustee, if I'm not wrong, in either 2007 or 2003. But I think it's 2007 when Abdul Uncle also ran and Ghulam Uncle ran. So, it inspires you that, hey, you can do something. But like I said, politics takes time. Yeah. It's not like an overnight job. No. So I invested a lot of time. I can proudly say that I have helped at least 10 to 15 MP, directly or indirectly. I can proudly say that I have helped few MPPs. I can proudly say I have helped councillors, trustees, not just door knocking, introducing them to stakeholders, 100%. community members, Yep. by donating, by Yep. door knocking. Yep. And what do you learn out of it? You learn a lot of things out of it. No, we are watching. We are Yeah. watching. When we invited you to our studio, definitely we do our homework. We are watching the work you do for our community. We also watch your social media page, and we watch that definitely, as you said, you're helping to the trustees, the councillors, the MPs. That's why it took you to in this field for almost 20 years, and now you are here. So definitely we are so proud that you're helping them in their campaigns, going for door knockings and all kind of stuff. So my question to you is that, did they come and supported you when you run for that TDSB trustee? It's a great question. And that's where my investment of 20 years came in. Every political people from every political background, they came and helped me out. Nice. They either door knocked, either endorsed me, whatever capacity they can, they help. Right? Definitely. And because all those 20 years of my work, they say, you know what, Zakir is a good guy. He can do a good job. He's good for constitute. Let's get him at the board. So I'm proud. They all supported me, and I'm very much happy, and I'm proud to have their support. No, definitely support is always needed. Without support, you cannot do or you cannot win. It's not a one man show that you can just go out, put your nomination out, and you can run the election or whatever you're running for, MPs, or doesn't matter, it's trustees or anything. You definitely need MP support. You definitely need community support. Also, you definitely need volunteers who can help you out to go out there and knock doors for you. But Zakir bhai, you know what? I will love to talk in English, but there are viewers, the people are watching you live right now. There are viewers who would like to hear us talking also in Urdu, also in Gujarati, and also in English. So if we can, when I ask you a question, if you can just mix it up, your answers, that will be very benefited to our viewers who are watching live right now through Harman TV right now. So let me go back and ask you a question related to TDSB, that how has your time as TDSB trustee helped you to become more concerned with the community? Very excellent question, Mohsin Bhai. What I can say about this is the children education is the most important thing. Yes, we need MPs. Yes, we need MPPs. Yes, we need counselors. But the most important part in all those things are our children education. Definitely, definitely. And in this system, the trustee role is hidden.
Nobody knows what a trustee can do. Definitely. But I encourage all the parents, community members, whoever is listening through you. Trustee role is the most important role in all the political hats you have. It involves your children's education from kindergarten to grade 12. Definitely. And this is the foundation of your child's future. Yeah. So this role for me was such important role because our community had a very hard time going in the system. Yeah. We have all the capacity and capabilities to do things, Yeah. Definitely. but to navigate the system, it's a challenging for us. Yeah. It could be language barrier, Definitely. it could be the work barrier. Yeah. So the community needed someone who can be a voice on behalf of them. So you are the voice on And behalf of them. Alhamdulillah, this role made me a community icon. Suck. When the pandemic happened, I was thanking Allah subhanahu wa ta'ala for blessing me with this role. Yeah. The reason was, during pandemic, the amount of help our parents were looking, because the community, not everybody has email addresses. No. Not everybody has a direct connections with the school. Yeah. What made me go one step further is give my cell phone. Definitely. So anybody needs any help, give me a phone call. Definitely. And trust me, Mohsin bhai, when you help one person, it makes you proud from inside. Yeah. And you thank Allah. Definitely. You thank the community members. 100%. You thank the constituent. You thank 100%. your friends. Yeah. Whoever helped you to become a trustee, because your one phone call can change somebody's life. No, definitely. 100%. And alhamdulillah, I'm privileged to have this role. And I'm thankful to my TDSB staff. When I raise my voice there, they say, Zakir, never we heard that the community is in need. No, definitely. And you bring that voice on table. Yep. So I'm privileged. It has, given me an opportunity to know various communities, not just our community. Because if you look at TDSB consists of multicultural society. Yeah. Right? It consists of 182 languages and culture. Imagine you have to deal with all the cultures, right? So it grows you from within. Yep. It gives you lots of opportunity to know people. Yep. That needs are different. Yep. Language, education, a culture, right? So this role has really, really, nourished me and grown me up and made me aware of lots of other issues via this channel. That could be nutrition programs. Yeah. Lots of students, they come early morning in the school without breakfast. Yeah. Right? Lots of kids, they don't have food to eat. Definitely. Right? So all those programs exist in the system. It's just we have to navigate in there. Yeah. And all the levels of government, they are helping. But it's the navigation. And when you go in, you know that it's there. The help is available there. So I'm proud to have this role. And alhamdulillah, I'm blessed to have that. No, definitely. As a community leader, I was talking to our guest. You know him very well, Brother Ahmed Bagya. Ji. He is running the organization name called GMA, and he mentioned your name as well. You're a part of that team as well. So when we were talking about politics, he also mentioned that he get engaged in the politics. Why? Because the work gets done easily. And we need somebody who can be our voice for our community. Yes. So today, you are the voice of our community. Yes. And you are the TDSB trustee. And we want, community want to be a voice one day at the Queen's Park. Inshallah. Right? So you are the only one person in community it's dealing with all this political and has a trustee already. Your name is out there. So I will go more into this because not only in trustee, you're also involved in Liberal Party. You're involved in the Liberal Party since you're here. I don't think so. You have changed the party No. because
You've been working with them, maybe, if I don't mind to ask you, how many years? Almost 28 years. 28 years. Yes. Wow, viewers, Brother Zakir Patel has been involved in the community and also involved with the Liberal Party with 28 years. So, Brother Zakir Patel, tell us about your experience with the politics in the Liberal, how it's going, and why you're involved with this Liberal Party, one party, particularly for 28 years. So, Mohsin bhai, as I told you, that Jean Chrétien was an idol at that time, and I like his leadership. And when you like somebody's leadership, you follow that leader. And he had a great qualities, like straight talk, right? And me, I'm a center-right person who likes to balance the budget, who likes to look after social programs and things like that. So yes, that encouraged me to join the Liberal Party. Was I planning to run for politics? No. I always wanted to make someone who can look after our community. And that dragged on and on and on and on. And what happened one day, I was driving from downtown Toronto, and I had a very bad experience. When I say bad experience, I called someone because a friend like you called me. He was looking for a help from a politician. So I called him and he goes, Zakir, he does not live in our riding. So that triggered me, right? Okay, yeah. That, you know what? I don't live in your riding either, but I come and help you. Definitely. So I say, you know what? The trustee position is vacant and I have a passion anyways. So let me try something. Yeah, So definitely. I went to City Hall, I filled the form, I called friends like you, hey, I'm running for trustee. And Alhamdulillah, to all the community members, whoever I went to, let's do it. Let's do it. Let's do it. For Liberal Party, coming back to the question, I was a director of the riding associations. I helped them in fundraisings. I helped them with so many other things. But the other question is why I did not run early. There was no plan, as I said. But then the time came that community definitely needed someone. And I said, let me try. Because I had the qualities, I had the knowledge, Yep. I had the friends. Yep. And friends like you who I can call and say, hey, Mohsin, I need a help. Definitely. And we were blessed when we ran for the campaign at Trustee. We had 197 volunteers, Yeah. right? That's not a small number. No, that's when a you big run number for a of trustee, volunteers, right? definitely. And this is, I call networking. Yeah. Right? That if you give, you will definitely get it back. And my 28 years with Liberal Party, did it give me something? Yes. It gave me good friends. They gave me lots of learning lessons, and I learned a lot from them. Zakir bhai, I will stop you here. When you said that when you give it back. So now something triggered. I will love to ask you this question in Urdu so the Urdu people can understand. आपने कहा कि अगर आप कुछ दो तो आपको मिलना चाहिए. जैसे आप हैं 28 साल से लिबरल पार्टी में, 28 साल से लिबरल पार्टी में रहने के बावजूद अगर पार्टी को आपको टिकट देनी थी तो वो दे सकती थी. 2 टर्म ट्रस्टी आप रह चुके हैं, आपका नाम कम्युनिटी में ऑलरेडी है. तो अभी की बात कर रहे हैं, बहुत 28 साल तो बहुत लंबे हो चुके हैं, उधर तो जाना भी नहीं है. अभी ही बात कर रहा हूँ जी, जो इलेक्शन अभी आया था स्कारबरो गिलवुड का. स्कारबरो गिलवुड के इलेक्शन के दौरान कम्युनिटी को पता चला था कि भाई जाकिर पटेल स्कारबरो गिलवुड के एमपी के लिए रन कर रहे. तो अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, आपने नॉमिनेशन के लिए भी तैयारी की थी. तो 28 साल लिबरल को देते हुए जब नाम जो बाहर आया तो आपका नाम तो नहीं था, वो नाम पार्टी ने कोई और को
लेट्स से पैराशूट कर दिया था, तो उस दरमियान आपके दिमाग में क्या बातें चल रही थी और आपने क्या सोचा कि आप पार्टी को अब छोड़ देंगे, पार्टी ने मेरा नॉमिनेशन नाम नहीं दिया, आप अपसेट हो चुके थे, मतलब क्या दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम आपके, जब आपका नाम ही नहीं आया उस टाइम और पार्टी ने जब पैराशूट कर दिया कैंडिडेट को, तो व्हाट वाज योर थिंकिंग? आप अगर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बता दें उस वो ये बारे में। मोहसिन भाई, अगेन अनदर ग्रेट क्वेश्चन। काफ़ी इनसाइट बातें हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि एक इंडिविजुअल और एक पार्टी, जब आप पार्टी में होते हो तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें दो चीज़ें थी। एक, पार्टी के पास क्या इतना वक्त था कि नॉमिनेशन प्रोसेस करें। दूसरी बात ये थी कि कितना वक्त बचा है, हाउ फास्ट कैन यू मूव, या हाउ फास्ट कैन यू मोबिलाइज, या right? So lots of things works in this type of things, right? Were we ready? Yes, we were ready, right? In what capacity we were ready? I can tell you that we were ready to go. या डेफिनेटली। But then, party decided to cancel all the nomination. It's not only about me. There were another three candidates who wanted to run for that nomination. But party said, you know what? No, we will nominate someone and we'll go for it. Don't forget, we had an interim leader. We never had a permanent leader. Now we have a permanent leader, right? So there was an interim leader. He thought that nominating somebody would save us time and, give us lots of energy. So that was their thinking. If you're asking me, I'm a party soldier. I don't change party alliances like that. Was party kind to me? Yes, I can say they were kind to me. Was I upset? Definitely I was upset. डेफिनेटली कोई भी अपसेट होगा। डेफिनेटली मैं Yep. बहुत अपसेट था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट्स अ पार्टी लीडर्स डिसीजन, एंड इफ दे थॉट दैट द करंट एमपीपी was the right candidate, good to go. And I don't knock for her as a as a party soldier. I don't knock for her. तो डेफिनेटली मौका मिलेगा। पॉलिटिक्स में हमेशा 4 साल बाद मौका आता है, तो इंशाल्लाह शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होगा। और वैसे भी लोग बोलते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो 45 के बाद आना है, तो डेफिनेटली। सब कुछ सेट हो जाता है। अभी मैं काफ़ी यंग हूँ, 48 ईयर्स हुए हैं। माशाल्लाह। राइट। अभी काफ़ी लंबा वक्त बचा है। नहीं बेशक, लेकिन क्वेश्चन ये इसलिए आपको पूछा जा रहा है जाकिर भाई कि जब पार्टी पैराशूट करती है कैंडिडेट को, तो आपके जहन में क्या आता है कि ये पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल गेम रची जाई जाती है, या उसको पैराशूट कर दिया कि जैसे आपने कहा कि आप कोई भी एमपीपी हो या एमपीज हो, अगर आपकी पार्टी से रन कर रहा है, आपने डोर नॉकिंग किया, आपने डोनेट किया, आपने उनके लिए क्या नहीं किया। 28 साल बहुत ही ज़्यादा साल है एक पार्टी में रहने से। 28 साल में तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि 10 साल में पार्टी जान जाती है अगर कैंडिडेट क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो आपको पार्टी ने ये टिकट तो नहीं दी, पैराशूट कर दिया, तो क्या कम्युनिटी अपसेट थी इसमें? कम्युनिटी ने आपको कैसा सहारा दिया, कैसे आपको मतलब कहा, और क्या मैसेज आपको कम्युनिटी से मिला, अगर वो आप हमारे व्यूअर्स को बता दें। देखिए, मेरी कम्युनिटी तो काफ़ी अपसेट थी। उन्होंने तो मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि जाकिर भाई, लेट्स रन फॉर इंडिपेंडेंस, लेट्स रन फ्रॉम समवेयर एल्स, लाइक नॉट समवेयर एल्स मीन सम अदर पार्टी। तो मैं उसमें राज़ी नहीं था। कम्युनिटी डेफिनेटली काफ़ी अपसेट थी। मेरे जितने भी दोस्त थे जिन्होंने आज तक मुझे हेल्प की है, अभी भी मेरे साथ रहते हैं, दे स्टिल अपसेट कि जाकिर, दिस इज़ नॉट फेयर। एंड आई सी, या इट्स नॉट फेयर, इट्स अ बाई इलेक्शन, इट्स नॉट अ जनरल इलेक्शन। इलेक्शन इज गोइंग टू कम बैक इन 3 years. लेट्स हैव सम पेशेंस, एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव अस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और डेफिनेटली। जैसे आपको पता है, लिबरल की अभी सिर्फ 9 या 10 एमपीपी है, टोटल 122 सीटें हैं, बेशक। 110 सीटें खाली पड़ी हुई है। या तो इट्स अ बिग प्लेस, एंड इंशाल्लाह 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 वी विल
definitely be there. नहीं जाकिर भाई, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एक कम्युनिटी के लिए, एक वॉइस के लिए, क्योंकि आप इन कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करते हो, आपको कम्युनिटी बहुत ही अच्छे से जानती है। तो ये एक मौका था एक कम्युनिटी का वॉइस क्वींस वे पार्क तक पहुंचाने के लिए, या एमपी या एमपीपी, वो जो भी इलेक्शन अभी स्कार्बरो गिल्ड में हुआ था, एक अच्छा मौका पार्टी ने गवा दिया। चलो वो तो खैर आपने कहा जैसा पार्टी की मर्जी थी, उन्होंने लगा कि वो कैंडिडेट सही है, टाइम नहीं था, और उनको टाइम नहीं होने के बावजूद उनको नॉमिनेशन भी नहीं किया, और उनको कह दिया कि भाई ये रन करेंगे, ये पार्टी से, ये हमारा कैंडिडेट है। तो आपने जैसे कहा आपने सपोर्ट भी किया। तो आपके डेडिकेशन की तो सबसे पहले मैं दाद देता हूँ कि आपने पीछे नहीं हटे, क्योंकि काफ़ी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, वो तो राइट अवे कूदेंगे कि भाई मैं तो पार्टी चेंज कर रहा हूँ, और ढूंढेंगे कि भाई मुझे इस पार्टी से टिकट मिल रही है, और पार्टी के अगेंस्ट हो Yes. जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, अभी तो 45 का ही हुआ हूँ, 48. 48 का ही हुआ हूँ, अभी मैं जवान हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अगर Inshallah. पार्टी ने चाहा तो आगे जाकर टिकट भी मिल सकती है। Inshallah. और आपने कहा कि अगर करंटली आपके लीडर जो अभी ही जो Win विन हुए. हुए हैं, जी. तो मे बी उनकी प्लानिंग, उनका थिंकिंग कुछ और भी हो सकता है, अगर वो भी आपको कहीं हेल्प कर दे, क्योंकि बिल्कुल. कम्युनिटी में हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। तो जाकिर भाई बहुत ही बढ़िया। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मोहसिन भाई आज, एंड थ्रू योर चैनल आई वांट टू से टू द कम्युनिटी, जब आपका कोई बंदा रन करता हो तो आपको एक होना पड़ेगा, एक होकर आपकी वॉइस को पार्टी को पहुंचानी होगी डेफिनेटली, कि डेफिनेटली, यू नो व्हाट, वी हैव अ कैंडिडेट डेफिनेटली, एंड वी हैव गिवन एज अ कम्युनिटी, या क्योंकि आपको पता है स्कार्बरो गिलवुड स्कार्बरो सेंटर की कम्युनिटी ने काफ़ी कुछ दिया है लिबरल पार्टी, छोटी मोटी बात नहीं है। या मेरे अलावा बहुत से लोग हैं, या there are lots of people in the community who has invested years of years in the party. अगर हम एज अ कम्युनिटी एक नहीं हुए किसी एक बंदे के पीछे, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद वन, या देन कम्स डेफिनेटली, टू, देन कम्स थ्री एंड फोर, so we have to collectively stand behind that person to uplift the community. डेफिनेटली, We came to this country in 1970s. वाओ, We have no MP, no MPPs, no councillor. Alhamdulillah, blessed with trustees. I was elected. Abdul Uncle, who came last Friday, was nominated, नाइस, right? There are other communities who came afterwards, या like the Sri Lankan communities. या Look, they have more MPPs and MPs, डेफिनेटली, right? And certain stuff, the community has to unite, डेफिनेटली, regardless of our differences, डेफिनेटली, right? We have to unite behind one person. या और अगर ये लेके चले तो मेरी बात छोड़ दें, हमारा अगला जनरेशन है, और मैं एज अ कम्युनिटी लीडर ये नहीं चाहूँगा कि 70, 30 और 23, 55 साल हो गए। नो, इट्स टाइम फॉर अस टू हैव एन MPP और MP. द नेक्स्ट जनरेशन, we will guide him, we will definitely uplift him as a community, and that's what we have to do, right? कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन और कम्युनिटी का जो बैकिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली, आप जो बोल रहे हो कि भाई किसी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, तो उसकी कम्युनिटी पूरी उसके पीछे लगी हुई थी, दे वर बिहाइंड देम। व्हेन यू टॉक अबाउट दैट द पर्सन हु वाज पैराशूटेड, अगर उनकी कम्युनिटी लगी थी, तो आप जब सोच रहे थे कि मैं रन करूंगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि आपकी कम्युनिटी भी आपके पीछे लगी थी? कम्युनिटी दो तरह की होती है, एक उनका एक थिंक टैंक है कि भाई हमको इतने MP MPPs चाहिए। हमारी कम्युनिटी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, उस सोच पे नहीं पहुँची कि भाई वी शुड हैव आवर रिप्रेजेंटेशन। एवरीबडी इन द कम्युनिटी is doing great job individually, Oh, definitely, not collectively. definitely, Last week there was Tamil Heritage Month. yeah,
You know how many organization came in for that Tamil Heritage Month to celebrate? You guess, मैं आपको बताऊंगा बाद में कितने आप सोचते हो जस्ट उनकी आप बात कर रहे हैं या उनके तमिल कम्युनिटी के कितने ग्रुप्स एक होकर तमिल हेरिटेज मंथ मनाने के लिए आए थे? मे बी होंगे मे बी 15 10 150 ग्रुप्स, ओह वाओ 150 ग्रुप्स 150 तमिल ग्रुप है, ऑल डिफरेंट डिफरेंट, कोई आर्ट्स एंड कल्चर, कोई एजुकेशन, कोई एजुकेटर्स, दे ऑल केम कलेक्टिवली डेफिनेटली to celebrate their heritage month. Yeah. This is what's lacking. When I say community, this is what we call community. कि आपको एक होना पड़ेगा कि भाई सब जमा हो जाए कि आज इसको ऊपर उठाना है, 4 साल बाद इसको ऊपर उठाना है, राइट? ये चीज़ अगर हमारी कम्युनिटी में आ गई तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 decades we will see lots of MPs and MPs. Well, Brother Zakir, let me tell you one thing that when you talk about the community has to unite, the community has to come together. Definitely, the community has to come together and hold each other hands. Then only you can get your representative who can be your voice, right? Definitely. But the problem in our community, जब तक मैंने देखा है कि जितने भी गेस्ट को हमने बुलाए Mhm. वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो खुद अपने एम्स, उनके गोल्स, आप उनके फंडे, आप कुछ भी बोलो, उनके खुद के मतलब वो लेकर चल रहे हैं. तो जब आप ऐसा बोल रहे हो कि कम्युनिटी को एक होना चाहिए, तो मैंने यही सवाल सारे गेस्ट को, जितने भी गेस्ट हरिमन स्टूडियो में आते हैं, मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से हम कम्युनिटी को एक कर ले, एकजुट हो जाए, तभी हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं. तो वो लोग का जवाब तो डिफरेंटली होता है. वो कहते हैं कि हमारे गोल ये ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, हमारे गोल ये ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, हमको कम्युनिटी को इधर लेके जाना है, हमको कम्युनिटी को उधर लेके जाना है. सारे दूसरी आके बात करते हैं. और आपने भी एक बहुत ही अच्छी बात की, जैसे तमिल के 150 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर उनके एक प्रोग्राम में आ सकता है. तो क्या आपको लगता है कि अगर हमारी कम्युनिटी में ऐसा इवेंट हो तो अपनी कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? बेशक, लेकिन उसके लिए मैं वहीं पे वापस आ रहा हूँ. ऑर्गेनाइजेशन आपके 200 हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफर होने चाहिए. जैसे आप हो कम्युनिटी सर्विस में, आप कितने प्रोग्राम्स करते हो, आप मील का प्रोग्राम करते हो, आप विंटर ड्राइव करते हो, तो ये आपका डोमेन है. भाई बेशक मोहसिन भाई आगे चल रहे हैं, अब हम इनके पीछे चलेंगे. बेशक जाकिर भाई एजुकेशन फील्ड में है, हम जाकिर भाई के पीछे चलेंगे. डेफिनेटली कोई और बंदा इंटरनेशनल स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, हम सब उसके साथ हो जाए. लेकिन हो क्या रहा है, हम सब हर चीज़ में हाथ रखना चाहते ना, हैं, और जब हम उसको कलेक्टिव होना चाहते हैं, हम हो नहीं पाते. So if we have that vision, everybody can do whatever they like because everybody has a talent. Each and every individual has a talent, right? It's just the way of taking out is different. So all we do is, if somebody is doing a great job, let's join him, yeah definitely right? He knows his leadership. He knows what he's doing, right? So if we do things like that, inshallah, in next, like I said, next decade, we will be united. We will be on one platform, inshallah, right? And we will have more lawyers, more doctors, more MPs, more MPPs, more teachers, more police officers. बेशक inshallah. Zakir bhai, very nicely you answered the question which I have asked you, but as I said, or we don't have that much of time that we can stuck at one question, so definitely I will love to move on. जब हम बात कर रहे थे लिबरल की, तो आप थोड़ी हाईलाइट कीजिए कि लिबरल पार्टी ने कम्युनिटी अफेयर्स को, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, या होमलेस हो, या इस्लामोफोबिया हो, ऐसी चीज़ों को क्या लिबरल ने कभी ऐसे कुछ हेल्प किया हो कि आपके जहन में, अगर आप भी एक कम्युनिटी लीडर हो, तो आपने कुछ ऐसा कुछ हेल्प किया हो स्टूडेंट्स को, या इस्लामोफोबिया को, या कम्युनिटी अफेयर्स को? तो अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता दें थोड़ा. मोहसिन भाई, फेडरल लिबरल्स जो है, उन्होंने इस्लामोफोबिया में
अपना एक मोशन भी पास किया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बिल 103, और मिसिसागा की एक एमपी थी, उन्होंने उसको रखा था। तो इस्लामोफोबिया का मोशन फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया है। उन्होंने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी रखा है ऑन इस्लामोफोबिया। तो ये रही बात इस्लामोफोबिया की। होमलेसनेस, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लास्ट ईयर भी उन्होंने तकरीबन $97 मिलियन सिटी ऑफ टोरंटो को भेजे थे। सिटी ऑफ टोरंटो कुछ ज़्यादा पैसे मांग रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस्लामोफोबिया, होमलेसनेस, इट्स all level of government has to tie their hands together, because any type of hate is not accepted in the society, डेफिनेटली. right? So federal government उस लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ कि they are definitely helping, because वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो सिटी को अपना रिसोर्सेज भेजते हैं, फिर सिटी उसको डिस्पर्स करती है, ठीक है। तो ये रही होमलेस की बात, इस्लामोफोबिया की बात। रही बात इंटरनेशनल स्टूडेंट की। इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना, आई नो everybody has a concern about more international student immigration coming in, the struggles of students. इसको आप अगर पॉजिटिवली देखना चाहे मोहसिन भाई, तो 20 से $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। आपके यहाँ मेरे ख्याल से कोई शकील भाई भी आए थे, ठीक है ना? Yeah, he is one of the. gave that $22 billion to $25 बिलियन इकोनॉमी। तो आज का जो स्टूडेंट आ रहा है ना, वो पैसे लेके आ रहा है। आज का इमिग्रेंट पैसे लेके आ रहा है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी है हमारे लोगों को, कि आप जो सोचते हो यहाँ पर वो नहीं है। मैं आपको मेरी बात करूँ, स्ट्रगल हर स्टेज में, आप भी आए थे, आपने भी स्ट्रगल किया है, मैंने भी स्ट्रगल किया है। Yes, मेरा sir. पहला जॉब था, मुझे $20 मिले थे 12 घंटे काम करने के। 12 hours. 12 आवर्स। मैं रात को 11 बजे जाता था, दूसरे दिन 11 बजे आता था, मुझे $20 मिलते थे। Wow. बट यू हैव टू लर्न अ ट्रेड, Yeah. यू हैव टू अडॉप्ट अ सिस्टम, Yeah. ठीक है। ज़्यादातर बेचारे इंटरनेशनल स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो आ जाते हैं और ज़्यादातर टोरंटो में आते हैं। सो टोरंटो इज़ गेटिंग क्राउडेड, shortage of housing, rental properties, because demand is very high. इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं हम। तो वो जाएंगे और डॉलर्स पे डॉलर्स आएंगे और हमारे स्टडीज़ भी हो जाएगा। डेफिनेटली है, कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। Yeah. अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, राइट। मैं भी आया था, मुझे भी स्ट्रगल था। मेरा पहला जॉब $5.66 का था, ठीक है। उस ज़माना सस्ता भी था, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिस्टम वही है, स्ट्रगल है। अगर आप उस स्ट्रगल से निकल गए बाहर, तो डेफिनेटली यू विल बी लाफिंग इन नेक्स्ट 20। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब आए थे तब सेल फोन नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके पास सब कुछ फैसिलिटीज़ है। वो बहुत फास्ट आगे मूव होना चाहते हैं। Yeah. और किसी भी चीज़ में आप फास्ट मूव नहीं हो सकते। अगर आपको मैकडोनल्ड्स का सीईओ बनना है या आपको मैनेजर बनना है, तो वो आपको क्वालिफिकेशन पे डायरेक्टली मैनेजर पे नहीं रखेंगे। Yeah. यू हैव टू फ्लिप सम बर्गर्स, Yeah. यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन दैट। जब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं मोहसिन भाई, और सैडली ये हमारे बच्चों को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। और आपके थ्रू, और आपके पास काफ़ी बड़ा ऑडियंस है, आपके पास हज़ारों में लोग आपको देखने वाले हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये मैसेज है मेरी तरफ, कभी कहीं पे भी इंटरव्यू में जाए, कहीं पे भी जाए, ग्रूम योरसेल्फ। अगर आप गैस स्टेशन की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाए, तो वहाँ पे भी एक डिसेंट कपड़े में जाए। होता क्या है कि ही डज नॉट नो द सिस्टम, Yeah. उनको बेचारों को पता ही नहीं है, तो वो कैसे भी चले जाते हैं। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वही आपका लास्ट इम्प्रेशन, राइट। दूसरा, हैव अ पेशेंस, आपको सब्र रखना ही पड़ेगा। जॉब मार्केट्स पूरी दुनिया के अंदर ख़राब है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कनाडा में ख़राब, ठीक है। तो यू हैव टू हैव सम पेशेंस। अगर पेरेंट्स, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आते हो, सेंड सम एडिशनल फंडिंग्स 6 महीने 1 साल के लिए। जाकिर भाई, मैं आपको इधर स्टॉप करूंगा। जब आप जी। बात कर रहे हो, आपने इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि स्टूडेंट को यहाँ पे आकर प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्ट्रगल है, को स्ट्रगल को भी फेस करना पड़ेगा।
ये तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को पता चल जाता है जब वो कनाडा आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो सवाल कर रहा था कि लिबरल पार्टी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है? जैसे अभी आपके इंटरनेशनल जो मिनिस्टर है स्टूडेंट्स के, वट एवर यू नेम इट और यू कॉल इट, उन्होंने $10,000 से $20,000 कर दिए। तो कि ये क्या है कि पता नहीं चल रहा कि वो क्या करना चाहती है, स्टूडेंट के पास से यहाँ पर पैसा बनाना चाहती है। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं तो उनके पास जॉब्स भी नहीं है। तो ऐसे कम्युनिटी लीडर में आपको भी पूछना चाहूँगा कि आपने कभी कोई स्टूडेंट्स को ऐसी कोई हेल्प की हो, या लिबरल पार्टी ने कोई फंडिंग की हो? क्योंकि देखो अभी आपके जो लीडर है हम्म। उनके पीछे जो ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर है, मैं नाम तो मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी बोले तो कंजर्वेटिव पार्टी, अभी ऐसा बैकफायर कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से अभी महंगाई आप बोलो, या ग्रोसरीज बोलो, या जॉब्स मार्केटिंग बोलो, या घर के प्राइस हम्म। बोलो, सारा कुछ ऐसा बढ़ चुका है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप घर बार आपको बेचना पड़ेगा, आप रोड पे आ जाओगे। तो मतलब ये लिबरल पार्टी की वजह से ये सब हो रहा है। लिबरल पार्टी ने अगर ये सब करवाया है, तो आपके लीडर ऐसा कोई प्लान लेके आए हैं कि ये सब बैक टू नॉर्मल भी हो जाए, या जॉब्स वापस आ जाए? इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट भी अभी बहुत ऊपर चला गया है। लोगों के ड्रीम होते हैं कि कनाडा में जाके मैं घर बाय करूंगा, घर भी बाय नहीं कर सकते। देखो अभी इंटरेस्ट रेट अभी 6% 7% अभी आसमान पे चढ़ बैठे है। तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप मौका दे रहे हो दूसरी पार्टी को बोलने के लिए, मतलब क्या कहना क्या चाहोगे आप? देखिए मोहसिन भाई, पहले हमको ये समझना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना, वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जब आप पढ़ने के लिए आते हो, उसका मतलब ये है कि आपको आपके अखराजात, आपके एक्सपेंसेस, उसको प्लानिंग करके आना है। डेफिनेटली। ठीक है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। आप बोले 10,000 के 20,000 कर दिए, बिल्कुल सही बात है। और मेरा एक दोस्त था, उसका बेटा 6 महीने पहले आ रहा था, उसको मैंने यही बताया। मैं बोला अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि $500 $600 में अगर आपका काम हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो यू मेक श्योर कि आप उसके लिए 1,000 1200 का इंतज़ाम करें। मसला ये है कि हम लोग दो चीज़ को एक कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम एज अ कनेडियन पीआर की तरफ ले जाते हैं। ये वो नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर टेम्पररी हो, हम्म। आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई, हम्म। आपको वापस जाना है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि कनाडा को हमेशा फोर्स की ज़रूरत है, लेबर फोर्स की ज़रूरत है हर फील्ड के अंदर। डेफिनेटली। तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप यहाँ पे पढ़े लिखे हो, एक काम करो, हम आपको पीआर देते हैं, आप रुक जाए। या तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उनका काम है आपको एक अच्छी सी पढ़ाई देना। ठीक है, तो वो उसकी तरफ आपको तवज्जो देती है, इमिग्रेशन की तरफ। ठीक है, दूसरी बात आपने बताई, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इज़ कंट्रोल बाय बैंक ऑफ कैनेडा। गवर्नमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पैंडमिक के बाद पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है। जो हिसाब से गवर्नमेंट ने लोगों को हेल्प की थी, तो काफ़ी पैसा मार्केट में आ गया। बेशक। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रोसरीज की प्राइसेस, राइट, हाई होती गई। या बड़े कॉरपोरेशन अपने ग्रीड में चले गए, या और अभी तक उसमें से बाहर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट, हमारी लिबरल गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन डालें। या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, पर इट्स अ लॉन्ग बैटल। इतने जल्दी ये कंट्रोल में आने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, आपने इंटरेस्ट रेट की बात बोली है, तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन दैट interest rate will slowly start going down, right? Once the inflation is in control, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, होगा भी। मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, साथ में ट्रस्टी के। तो आई एम सीइंग इट बाय नेक्स्ट अक्टूबर देयर विल बी सम रिलीफ, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को भी आपको देखना है, पूरी दुनिया के अंदर जो हालात है, मामलात है, मिडल ईस्ट की हालत देखिए, राइट। और दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट। पेंडामिक जाता है, पेंडामिक आता है, तो दैट फियर फैक्टर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो काफ़ी चीज़ें हैं। अपोजिशन लीडर का काम है डेफिनेटली गवर्नमेंट को बैश करना।
ठीक है, हम पिछले 3 टर्म से गवर्नमेंट में हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती कभी कभी। तो डेफिनेटली जब आप गवर्निंग में होते हो ना, तो आपको कुछ डिसीजंस के सामने ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। No, definitely, Zakir bhai. I understand what you're saying, but I don't want to go that much of in deep. As you said, students are here, they come here to study. Definitely they come to study, but उनके जहन में ऐसा है कि यहाँ पे जॉब होगा, यहाँ पे अच्छा होगा। तो आपने जैसा कहा कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। Zakir bhai, let's move on because I have too many questions to ask you. That if you can answer very shortly, as a community leader, did you any launch recently campaign to better our community? जैसे आपने कोई कैंपेन लॉन्च किया हो और अपनी कम्युनिटी के लिए, अगर आप हमारी कम्युनिटी को बता दें, व्यूवर्स को बता दें, कौन सा कैंपेन जो आपने लॉन्च किया हमारी कम्युनिटी के लिए? मोहसिन भाई, अभी तो मैं तो ज़्यादातर एजुकेशन पे मेरा तवज्जो है, एंड आई एम मोर फोकस ऑन एजुकेशन। आई एनकरेज अवर किड्स to join the high-end job. Hmm. Like for girls, I encourage them to become teachers. Because the more the immigration comes in, we will need more teachers in this system. And our girls who are born and raised here should definitely look into their profession. Uh, Police initiatives. Hmm. There's lots of police initiatives, right? So I'm working on that. My goal is to make at least 10 police officers from community in next few years. I'm encouraging few girls and boys to become teachers. तो हर फील्ड से मुझे 10-10 लोग का एक टारगेट है मेरे जहन में, क्योंकि टीचर्स, लॉयर्स और police officers, right? It's my goal, and inshallah, I will definitely work hard to make those 10, 10, 10 from the community. I'm searching for them, and inshallah, I'll find them one. My other plan is to have a food bank. It's a very dire need. आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बोलो या लोकली बोलो, लोकली भी बहुत ज़रूरत है। तो ये एक सपना है, इंशाल्लाह आप लोग जैसे दोस्त की हेल्प से नियर फ्यूचर में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। राइट। और मैथ साइंस का ट्यूटरिंग का प्रोग्राम्स, राइट, आई वांट टू डू दैट। तो हमारे बच्चे मैथ और साइंस में काफ़ी पीछे हो रहे हैं, राइट। तो उसकी तरफ एक काम कर रहे हैं हम लोग। जब एक दिन सब शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह वापस आपके पास आएंगे हेल्प के लिए, आपके चैनल के थ्रू उसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद चीज़ें हैं, यू नो, वी विद अलॉन्ग गुड फ्रेंड्स वी आर प्लानिंग ऑल दिस, एंड इंशाल्लाह वी विल बी तो सक्सेसफुल। दिस इज ऑल योर प्लानिंग। यस। मेरा सवाल आपको ये था कि आपने अपने तरफ से कोई कैंपेन या कुछ लॉन्च किया हो, ऐसा कुछ किया नहीं है, बस आपका ये गोल विजन है, आपका एक विज़न यस है। यस। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका विज़न सक्सेस हो, दुआ करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। तो अगर एक छोटा सा मैसेज अगर आप पहुंच देना चाहते हो कि हाउ आर यू डूइंग विथ हेल्पिंग विद द नीड्स ऑफ द पीपल, अगर आप ये सवाल का जवाब दे दे कि आप किस तरह से हेल्प करते हो लोगों को, अगर कोई की हेल्प की ज़रूरत हो, अगर ऐसे कोई बंदा आपके पास आ गया और आपने हेल्प की, कोई एक एग्जांपल दे दे, जैसे आपने कभी कोई को हेल्प की हो, कोई कॉल आ गया, कोई मुसीबत में हो या कुछ भी, कोई भी एक एग्जांपल हमारे व्यूअर्स को आप बता दे। मोहसिन भाई, अब कॉल तो हमेशा आते हैं, रोज़ आते हैं, ठीक है, और मेरा नंबर हर किसी के पास है। डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा हो, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, कल्चर, काम करना मेरा काम है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी काम अल्लाह का है, अल्लाह उसको करवाता है। पेंडेमिक में काफ़ी लोगों को लैपटॉप के बारे में हेल्प किया। अभी 15 दिन के पहले की बात है कि स्कूल से मुझे एक पेरेंट का कॉल आया, बोले जाकिर, माय सन इज़ लुकिंग फॉर लैपटॉप एंड ही इज़ इन ग्रेड 12 and he's been waiting for very long. I say, why you did not tell me before? He goes, yeah, but I thought it's going to come today. So I said, okay, give me your student ID and I'll follow up. So I call the superintendent and I say, what's going on with this? He goes, trustee, let me follow up. Next day, the whole grade 12 got the laptops. माशाल्लाह। This is one of the aspects. There was a teacher
who was struggling to get interview, and she was trying for last 6 7 years, and she came for the help. And I said, okay, fine. I called someone. I said, what's wrong? Why they're not getting interviews? And they say, okay, trustee, we'll look into it. They don't give you reasons, right? She got the interview. Now she's a teacher, right? So there are so many things, right? I mean, I'm blessed if I get a phone call. मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूँ कि अगर कोई का कॉल आता है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो कभी कभी मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, कभी कभी मैं किसी और को, क्योंकि आप लोग सब अपनी फील्ड में माहिर है. डेफिनेटली राइट. तो ये वही चीज़ है मोहसिन भाई, कि मुझे कॉल आया, मुझे भी किसी के पास से ही करवाना है. डेफिनेटली. ठीक है, तो ये अल्लाह का शुक्र है. इट्स अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह दैट समबडी कैन कॉल यू. एंड ऐसे तो बहुत से है जिनको हेल्प की है, और मुझे भी कभी कभी हेल्प की ज़रूरत होती है. राइट, लाइक आई सेड, इट्स गिविंग एंड टेकिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कभी किसी को जॉब की ज़रूरत होती है. राइट, तो मैं सबको तो नहीं, लेकिन जितनों को मैं जानता हूँ मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ. मेरा कोई दोस्त जानने वाला है जिसका कोई रेस्टोरेंट हो, कोई छोटा बिजनेस हो, यार एक बच्चा आया है कि बच्ची आई है, प्लीज़ लुक आफ्टर, अगर हो सके तो. राइट, तो आई जस्ट पास ऑन. जितना मेरे से हो सकता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ. जाकिर भाई, आप डेफिनेटली हेल्पिंग इज़ ऑलवेज अ ग्रेट थिंग. कोई को हेल्प चाहिए तो हेल्प करनी चाहिए, और आप जैसे कम्युनिटी लीडर अगर हमारी कम्युनिटी में है तो वो आपके ऊपर ही रिलाय रहेंगे और आपसे ही हेल्प की उम्मीद भी रखेंगे. तो डेफिनेटली you try your best to help each and everyone who come to you. So जाकिर भाई, मेरे जहन में एक, आप जब 2 साल से ट्रस्टी है, हमारी कम्युनिटी में बहुत से पेरेंट्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मक्का इस्लामिक सेंटर है, उधर भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और सवालात करते हैं कि उनकी बेटी जब हिजाब पहन के स्कूल में जाती है तो उनको बुली किया जाता है, उनको प्रॉब्लम दिया जाता है. तो एज ए ट्रस्टी आप क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को? मोहसिन भाई, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है. मैं पेरेंट को आज एनकरेज करता हूँ, कभी भी आपको अपने रिलीजन के ऊपर कोई भी बुली करे, डजंट मैटर व्हाट इज़ एन इश्यू, कंप्लेन करें. लॉज अ फॉर्मल कंप्लेन. होता क्या है, हमारी कम्युनिटी है ना, कंप्लेन नहीं करती. Yeah, that was the big concern. Last week हमारे जो गेस्ट थे वो भी वही कह रहे थे, हम कंप्लेन नहीं करते. people are not complaining. कंप्लेन, और TDSB चलती डेटास के ऊपर. Yeah. अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे तो स्टाफ को पता नहीं चलेगा कि भाई ये कम्युनिटी की इतनी कंप्लेंट्स आ रही है, और मसला यही है हमारी कम्युनिटी का. दे डोंट गो एंड कंप्लेन. क्या है, हमारे बच्चों को टारगेट करेंगे. अरे आप मुझे कॉल करें ना. इफ somebody is giving hard time to your child, give me a phone call, but you have to come as a parent. Definitely. If a parent is not coming with me, I'm helpless too. Definitely. So we have to lodge complaints. Any incident like any hate incident, regardless of what it is, encourage parents to file a complaint. छोटी भी complaint हो, आपको छोटा सा भी कुछ लगे, make a complaint. Make a complaint. That's a very great thing that Brother Zakir Patel is saying right now. As a school board trustee, if your child going to school and wearing hijab, and if she is getting bullied, please do not hesitate to make an official complaint. Don't get scared that, oh, they will target my child or something might happen. If you're scared, please also talk to Brother Zakir Patel. Call him. Zakir bhai, if अगर आप अपना नंबर आप दे दे हमारे व्यूवर्स को, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो, कोई आपको कॉल करना चाहता हो, तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को अपना नंबर एक बार दे दे तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह. मेरा नंबर 647-709-7973, या मुझे TDSB की ईमेल एड्रेस करें, zakir.patel@tdsb.on.ca. कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ईमेल इज़ द बेस्ट way to connect with me, and inshallah I'll get in touch with you within 24 to 48 hours. जाकिर भाई, अब देखो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लोग हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, और लाइव क्वेश्चंस हमारी टीम हमको लाइव क्वेश्चंस भी भेज रही है. अगर हमारे आप हरमेन टीम पर देखते होंगे तो ये सवाल मौजूद है कमेंट्स के अंदर कि व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग फ्री ट्यूटरिंग प्रोग्राम दिस ईयर. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोहसिन भाई, अगेन ग्रेट क्वेश्चन. ट्यूटरिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, फंडिंग बाहर निकल चुका है, एंड इंशाल्लाह द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग अगेन.
विद इन फ्यू वीक। फंडिंग ऑलरेडी अलोकेट हो चुकी है, तो फ्री ट्यूटरिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बिकॉज जाकिर भाई क्यों ये क्वेश्चन आ रहा है कि काफ़ी बच्चे हैं जो जिनके बच्चे वीक होते हैं, उनको ट्यूटरिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। बेशक और बेशक। अभी आजकल एक पेरेंट्स कमाने जाए तो वो ट्यूशन की फ़ी नहीं निकाल राइट। सकता। डेफिनेटली उनके माँ बाप को दोनों को जाना पड़ता है, और ग्रोसरीज, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब अगर वो पे भी कर देते हैं तो उनके पास ट्यूशन की फीस के लिए बचता नहीं है। तो डेफिनेटली you should look into it The as program a is coming. TDSB trustee. Yes, it's coming. The program is coming. I'm a chair of TDSB Finance and Budget Committee. So I have the information. The funding has rolled already, and the program should start within 2 to 3 weeks. That's a very good news, viewers. The program is coming and it will be starting very shortly. Zakir Patel, he is a funding chair of that committee, if I'm not mistaken. I'm a finance, budget, and enrollment chair. MashaAllah. TDSB has a finance and budget committee, which is the most powerful committee at TDSB, which looks after $3.5 billion of a budget. आप लोग बजट के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि बजट जो है वो हमारे बच्चों पर इम्पैक्ट करता है। Definitely. जब एक कंसल्टेशन होते हैं, आपकी नीड्स क्या है ना, तो आप उस बजट में सिर्फ शिरकत फरमाएं, आपके इनपुट्स रखें। अ स्मॉल आइडिया इज़ आल्सो अ ग्रेट आइडिया। तो ये बजट की जब भी मीटिंग हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, मोहसिन भाई, आप पेरेंट्स को एनकरेज करें कि ये मीटिंगों में जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमें पता चलता है कि कम्युनिटी को क्या चाहिए। मेरे पास 11,000 पेरेंट्स हैं, ठीक है। 11,000 पेरेंट्स के अंदर से कितने एक्टिव होते हैं? दूसरा सवाल हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है। वो पूछ रहे हैं कि अगर आप एक्सप्लेन कर सको यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये सवाल मेरे पास से नहीं आ रहे, ये हमारे ऑनलाइन सवाल जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप हमारे व्यूवर्स को बता दें। मोहसिन भाई, इसका मैंने ज़्यादा तो होमवर्क नहीं किया है, लेकिन करंट लिबरल गवर्नमेंट along with their partners are trying to implement a basic income for low income people, कि आपको हर महीने एक सेट अमाउंट मिल जाएगा। तो उस पर अभी काम हो रहा है, कब आएगा मुझे पता नहीं है, और फुल पॉलिसी पे मैंने इतना होमवर्क किया नहीं है, तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टेकिंग दिस इन अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। या तो जब तक मेरे पास इसकी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको ज़्यादा उस पर मालूमात नहीं दूंगा, लेकिन इतना पता है कि इट्स अ गारंटेड इनकम फॉर पीपल हु अर्न लेस देन सर्टेन अमाउंट, इट्स फॉर एवरीवन। I hope that's answer the question that viewers were asking online. But definitely, we will encourage our viewers to call Brother Zakir Patel. He is working on this different projects as a chair and as a TDSB trustee. तो जाकिर भाई, आखिरी सवाल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू जारी रखूं। डेफिनेटली आई विल लव टू टॉक टू यू फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मायने रखता है, और मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। सो आखिरी सवाल, पॉलिटिक्स के हवाले से आपका आखिरी स्टेप, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है एज ए पॉलिटिक्स में? आप क्या, कहाँ देख रहे हो अपने आप को? मोहसिन भाई, डेफिनेटली मैं इंतज़ार में हूँ कि अल्लाह ताला एक अपॉर्चुनिटी दे, तो एमपीपी या एमपी कभी भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जगह खाली हुई, मौका मिला, तो वो एक गोल है इंशाल्लाह। एंड अल्लाह कामयाब करे, और आप लोग जैसे दोस्त का वापस आमीन, दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। दुआ करें, अल्लाह कामयाबी दे। अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, 2 बार 2 टाइम ट्रस्टी के लिए रन किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह विद अ गुड मार्जिन, Yep. राइट। तो बस यही है नेक्स्ट स्टेप्स, तो पॉलिटिक्स का यही है, एमपी एमपीपी का गोल है। कभी काउंसलर की सीट खाली हो गई तो इंशाल्लाह उसमें भी इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी पहली मिली तो जाएंगे इंशाल्लाह। Inshallah, that was Zakir Patel. Definitely, he wants to be in the game. He wants to be in the politics, and he is aiming and he is saying that if he get an opportunity, he will go for councillor or MP or MPP. That's our Zakir Patel, whose aim is still high. So, viewers, you're watching today your community with Mohsin Patel. We are here to highlight the great work of the community who are doing for your community. So, I would like to thank Zakir Patel for thank you so much for coming to our studio, and definitely
We will be having a part 2 with you if public demands. Thank आप you. आज आए हो पब्लिक की डिमांड से ही आए हो. आपको मैं बता दूं, लोगों ने मैसेज किए थे, हमारे स्टूडियो में कॉल्स भी किए थे और कहा गया था कि आप जाकिर पटेल को कब ला रहे हो. तो जाकिर पटेल was in the studio today with us. He talked about lot of great stuff of your community, the role what he's doing right now. And if you haven't watched the podcast, I would request each and everyone, please watch the whole podcast. Please watch the whole segment. Very informative. You get a lot of things to learn which your community leader has to say for your community. So, thank you once again, all the viewers, for watching for today's segment. We will be coming back to you next week, Friday, sharp 6 p.m. But I will request one thing. Please download our free app. If you're iPhone or Android user, you can download for free. Also, if you're watching on social media on a Facebook or a YouTube, like our page and share with your friends and family. If you're watching on a YouTube, please, 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 please do not hesitate to hit that icon so you get notified whenever we go live. I will say Assalamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh for now. Thank you very much. Ya